आसला ऑडियो ऑडियो आसला ऑडियो एबे आसला ओके डन ताले इंडिया G20 opportunity for an African Renaissance article by Mahesh Renaissance माने complete change Renaissance माने complete change by Mahesh Sachdev who is a retired Indian Foreign Service officer who served as ambassador to Algeria and High Commissioner to Nigeria. He has authored a book Nigeria a Business Manual. Renaissance माने complete change complete haul करिबा overall करिबा similar word होची overhaul OBERHAUL like an absentee landlord माने landlord जोटी present नांती absent अचंती like an absentee landlord Africa is flagging its demand nowadays on multilateral fora forum ra plural होची fora on multilateral fora such as BRICS Brazil Russia India China and South Africa the G20 and the United Nations General Assembly for a continent with 54 countries over a quarter of the global south. It is populated at BRICS and the G20 by South Africa, an atypical, typical mane eka baliya, atypical mane olga, representative of the black continent. पिला मने एटी देखो ग्लोबल साउथ माने कौन बुझी पारछो था इक्वेटर दुईटा का पार्ट रे डिवाइडेड इक्वेटर एटा नॉर्थ एटा साउथ ग्लोब रु वडा सिला ग्लोबल most of the developed countries it is believed ठीक अछि सबो ग्लोबल नॉर्थ रे तो we are talking about global south तो ई टर्म टा को मन रखिबा को ग्लोबल साउथ काई की are you getting my point challenges and disruptors Africa in general and the Sahel region in particular are passing through several existential challenges such as misgovernance, unplanned development, the dominance of ruling tribes and corruption. Africa रे Sahel region रे कौन होची different तमरा एबे चालीची semane existential challenges माने to be or not to be semane रहिबे as a country as a continent ना रहिबे नि unplanned development dominance of ruling tribe tribal conflict and corruption recently new disruptors such as the Islamic terror inter-tribal scrimmage, changing climate, runaway food inflation, urbanization and with youth employment have further strained the traditional socio-political fabric. बढ़िया कथा कहले से कहले ऑफ लेट कौन होची एबे कौन होची ऑफ लेट एबे तमरो इस्लाम टेरर इस्लामिक टेरर आगुरु तो एडा को थिला ही थिला या छड़ा एबे नुआ नुआ जिंस कौन क्रिपिन करिछि इस्लामिक टेरर इंटर ट्राइबल स्क्रिमेज माने कौन गोटे नॉइजी फाइट गोटे राइटियस फाइट चेंजिंग क्लाइमेट रनअवे फूड इन्फ्लेशन रनअवे माने जे दौड़ी की पळेबो ता माने तम पकड़ रे रहिबनी तो सेइतरु वर्ड आसिला रनअवे फूड इन्फ्लेशन ता माने फूड इन्फ्लेशन एते लेवल को पळेलानी से एबे बियॉन्ड कंट्रोल हे गलानी urbanization and youth unemployment have further strained the traditional socio-political fabric. As the past military intervention by France, interfere negative, intervention positive. The United States and Russia's Wagner group to curb the militancy have shown they frequently become part of the problem. जेतबळे जो माने problem को काई कि ना power corrupts absolute power corrupts absolutely ताले जो माने कौन करुतले जो माने आमर करप्शन को रोकिबा पाई जिंस को रोकिबा पाई स्टार्ट करूचंदी सेही माने ही काली डेट रे प्रॉब्लम बळिया निजे ठिया ही जाउचंदी आजी डेट रो जो माने कौन
आज डेट रो जो माने चेष्टा करूचंती कि से माने प्रॉब्लम को कम करिवे से माने पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम निजे ही जाउचंती these interventions have cost keeping dictatorships in power to protect their economic interests such as uranium in Niger, gold in Central African Republic and oil in Libya से माने कहउचंती देखो बढ़िया कथा कहले कहले ए सब जिंस ताले काई की करा जाउची प्राइवेट आर्मी को काई ना तांकर कॉस्ट अछि माने तांकर किछि फायदा केस रे फायदा बढ़िया यूज करा जायछि तांकर किछि कोन अछि फायदा अछि इंटरवेंशंस ऑफ कॉस्ट कीपिंग डिक्टेटरशिप्स इन पावर डिक्टेटर माने पावर रे रहउचंती जेमिति से एग्जांपल नैचंती कि यूरेनियम नाइजर रे गोल्ड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड ऑयल लिबिया रे ए माने कोन ए माने को प्रोटेक्ट करबा पई डिक्टेटर्स मानकर सेल्फ बा वेस्टेड इंटरेस्ट बा वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करबा पई ए माने को authority दिया जाउची until recently African nationalists took pride in the continent having seen the last of generals in power सब लास्ट जनरल्स पावर रे माने डिक्टेटरशिप रो एंड घटी थिला अफ्रीकन नेशनलिस्ट but thanks to the socio-political disorder highlighted the past decade has seen the generals coming back in Egypt Burkina Faso Mali and Nigeria जोटी जोटी डिक्टेटरशिप एंड हेतिला एते कोन हला सोशियो पॉलिटिकल डिसऑर्डर हला काहे कि ना गोटे डेमोक्रेसी रे रहिबा पई ऑर्डर रहिबा नियाती दरकार एते तमरो डिसऑर्डर हला अल्टीमेटली कोन हला अल्टीमेटली समने पुणी बैक टू पावर आसिले द आर्म्ड फोर्सेस इन लिबिया एंड सुदान हैव स्प्लिट एंड आर वाइंग फॉर सुप्रीमेसी नॉट ओनली अन्य माने प्राइवेट प्लेयर्स आसिले गवर्नमेंट रो भी विंग्स दुईटा विंग से माने भी कोन कले निज भितरे स्प्लिट करि गले काहे कि ना कू करबा पई क्यार बेसी दबदबा रहिबो while most military establishments in these countries are relatively weak and incapable of defeating the Islamists and tribalists their top brass do not lack political ambition से कहउचंती most military establishment relatively weak अचंती incapable Islamist और tribalist मानन को हरेबा पाई काहे कि ना तांकर सेति की सामर्थ्य नाही सेति की फायर पावर मैन पावर गन पावर नाही किंतु देयर टॉप ब्रास डू नॉट लैक पॉलिटिकल एम्बिशंस ता माने टॉप ब्रास माने हाईएस्ट लेवल रो तमे देखिथिबो जेमिति तमरो आर्म रे कोन हुए तमरो जो शर्ट रे आर्म रे सब ब्रास रो मेडल फेडल लगा जाइथिबो एटा केत्ते बेले लगा जाय एबे एटा सेत्ते बेले लगा जाय जेत्ते बेले हमरो कोन करा जाय सेत्ते बेले एटा लगा जाय जेत्ते बेले हमरो हाई लेवल रो कोन रहिबो हाई लेवल रो हमरो टॉप ऑफिशियल्स बे तांको टॉप ब्रास को जाय से कहउछन्ती एते सत्य भी टॉप ब्रास माने एई येरु बाहरी पारु नांती कि एई ख्वाबरु बाहरी पारु नांती तांकर पॉलिटिकल एम्बिशंस किछि कम नुए एई सबु परे भी तांको पॉलिटिकल एम्बिशंस हाई दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से तांको पॉलिटिकल एम्बिशंस हाई The reasons for the returns of generals are complex and often specific to the national situation. जो जगह रे डिक्टेटर माने आसुचंती से माने कोन पई आसुचंती सेटा कंट्री स्पेसिफिक के आसुची काई के आसुची द अफ्रीकन पीपल एलिट इज एट इट्स विट्स एंड माने विट माने होची चालाक विट्स एंड माने चालाकी रो एंड रे माने तम बुद्धि वृत्ति आउ काम करूनी आउ तमरा बुद्धि काम करूनी टू पुट द जेनी ऑफ बोनापार्टिज्म बैक इन द बॉटल ताले बढ़िया कथा कहले अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस से कहउचंदी द अफ्रीकन पॉलिटिकल एलिट माने जो माने एलिट माने होउचंदी टॉप लेवल रो तो जे टॉप लेवल रो बा पॉलिटिकल एलिट अफ्रीका रो विट्स एंड से माने जानि पारु नांती केमिति करिवे टू पुट द जेनी ऑफ बोनापार्टिज्म नेपोलियन बोनापार्ट डिक्टेटर सेठरु आसला वर्ड बोनापार्टिज्म तो से कहउचंती हमर जेनी बोनापार्टिज्म रो जेनी को पुणी वापस बोतल रे केमिति भर्ती करि देबे ता माने केमिति डिक्टेटरशिप को कंट्रोल करिवे सेई पार्टा जानि पारु नाहंती दे आर अर्लियर रीजनल एंड कॉन्टिनेंटल
prescription of delegitimization and containment of the pushes is becoming increasingly less effective as regimes have proliferated. जेमिति जेमिति regime कौन होची, regime माने government, ताले जेमिति जेमिति तमरा government कौन होची, जेमिति जेमिति तमरा prescription of delegitimization and containment of the pushes. pushes माने जे गोटे push रे, push माने गोटे coup करिबो, गोटे मिलिटरीली इलेक्टेड गवर्नमेंट को थ्रो करिबो, तो सेइत्रु आसिला तमरा कोन पुश इट. तो एबे से कहउचंदी लेजिटिमेट गवर्नमेंट को जो माने कोन करिवे, जो माने डिथ्रोन करिवे, लेजिटिमाइजेशन एंड कंटेनमेंट तांको अटकेबे इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली लेस इफेक्टिव. धीरे धीरे कमी कमी जाउची, काहे कि ना डेमोक्रेटिक आ इकोनॉमिक सिचुएशन भलो नाही, तले ए जिंसो कोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमी कमी जाउची. with such less effective as such regimes are proliferated. proliferate करियो माने स्प्रेड करिवो, सेमान को एई जो अनार्की रो रूल अछि सेटा स्प्रेड करी करी जाउची. तांको नेपोलियन बोनापार्टिज्म रो तमरो कोन तांको जेनिंग को आउतरे वापस बंद करी दबा बॉटल भितरे कार साहस नहीं बा सेमिति आ सिचुएशन क्रिएट हो नाही. thus when economic community of west african state ECOWAS recently threatened to act militarily against Niger's junta, two member states Mali and Burkina Faso, both ran by military governments, opposed the idea. Similarly, Sudan's warring generals have defied calls for a ceasefire. तामने जेतबळे हमर कोन होची इकोवास कहला नाइजर रो जनता अगेंस्ट रे एक्ट करिबो मिलिटरी जनता अगेंस्ट रे, काहेकि ना मिलिटरी रूलर जोडी मिलिटरी रूलर तिले समान ताको अपोज कले. सिमिलरली सुदान रो जनरल भी सीज फायर पई मना करूचंदी. दुईटा वारिंग फैक्शन गवर्नमेंट रो दुईटा विंग दे आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ सुदान, eroding international support. Africa's problems are further compounded by an erosion in its international support base. Not only एमिति चलीची लोक या पर को नजर भी जाउनी. लोक केतबळे नजर जिवो जेतबळे निजर कट ऑफ क्लियर हेतिबो गवर्नमेंट जॉब रे थिबो तमे कहि परिबो कोन कले गवर्नमेंट जॉब क्लियर हबो केमिति हबो एंड सो ऑन. तमरो तो निजर क्लियर होउनी तमे अन्य को कोन कहबो. सेमिति लोकंकर निजर कोविड परे तो रूसो यूक्रेनियन वार परे तो लोकंकर निज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होउनी, से माने अन्यर सपोर्ट बेस कोन करिवे तांको प्रॉब्लम रे कोन टांग अडेबे. एग्जैक्टली व्हाई हेस्टिली अमेरिका रिट्रीट करि गला अफगानिस्तान रो. China has been Africa's largest trading partner and investor, but a slowing economy and trade have reduced its appetite for Africa's commodity. China रो निजो इकोनॉमी कमी कमी चालुची, तो निजो इकोनॉमी जतबळे कमी कमी चालुची तार एपेटाइट कमी कमी ता भोको कमी कमी चालुची अफ्रीका रो कमोडिटी पई. in Belt and Roads initiative, its Belt and Road initiative has raised the debts of some African countries to unsustainable level. आउ Belt and Road initiative जोटा माने नहीं थिले ता पई जो माने स्पॉन्सर करूथिले तांकर एते कर्जा आइ गलानी कि से माने सस्टेन करि पाउना. इंटर्न कॉजिंग, इंटर्न माने इन कोन इफेक्ट कॉजिंग देम टू सीड कंट्रोल, सीड माने स्टॉप करिबा सीड कंट्रोल ऑफ सम ऑफ देयर एसेट्स टू चाइना. से माने कोन करछन तांगा एसेट को चाइना रा हवाले कर दउचंदी. Russia previously promoted the Wagner group in Africa as a shortcut for security, but after the militia mutinies against the Kremlin and the death of his chief in an air crash on Wednesday, the situation is unclear. से कहउचंदी वागनर चीफ को रखा हेतिला प्राइवेट पार्टी को दे दबा से माने जाई कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिवे, किंतु से माने जतबळे इलेक्टेड गवर्नमेंट अगेंस्ट रे काम कले, नॉट ओनली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगेंस्ट रे काम कले, जेतबळे से माने कोन कले जेतबळे से माने क्रेमलिन को ओवरथ्रो करबा को चेष्टा कले सेतबळे हेला कोन, सेतबळे गोटे सिंपल जिंस हैला सेतबळे हेला कोन, सेतबळे मिलिशिया जोटार थिला सैंक्शन रे से माने एबे अनक्लियर. आउ तांकर कोन वागनर ग्रुप चीफ तमे जानिच कोन सी निजे वेडनेसडे रो गोटे जो प्लेन क्रैश हैला ओवर रशिया सेई तरे सी इट इज feared that Evgeny Prigozhin is dead.
Russia, which is under Western economic sanction, hosted an African summit in July that saw tepid participation. ताले सेई तरह पार्टिसिपेशन टेपिड माने कोन कावर्डली ताले बा टेपिड माने कोन मॉडरेटली वार्म ता माने किछि विगरस नुए कावर्डली पार्टिसिपेशन ए केस रे रशिया व्हिच इज अंडर वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शन होस्टेड एन अफ्रीकन समिट in July that saw tepid participation. Tale besi nation participate colony. France, the United Kingdom and other colonial powers as well as the United States have continued to exploit mineral wealth in Africa. सबू डेवलप्ड कंट्री से माने मिनरल वेल्थ अफ्रीका रू आणले निज कंट्री को रीच करेले सुपर पावर करेले बट देयर इकोनॉमिक डाउनटर्न हैज लिमिटेड देयर आउटरीच किंतु एबे सिचुएशन ग्राउंड रे पूरा अलगा ए डेवलप्ड कंट्रीज रो निजर हालत खराब चाहे से यूके हो फ्रांस हो अमेरिका हो चाइना हो सेहिति पई तांकर डाउनटर्न हैला डाउनटर्न माने तळकु से माने खसी खसी आसिले तळकु खसी खसी आसिले तो डाउनटर्न हेले तांकर आउटरीच बा से माने कोन हेल्प करि परिबे सेही तर भी लिमिटेड रहिला तांकर स्कोप कोन हे गला लिमिटेड हे गला moreover Europe's main concern is limited to stopping illegal migration from African shore. यूरोप रो मेन कंसर्न होची अफ्रीका आउ यूरोप जेतु बॉर्डर शेयर करूचंदी तांको लोक केमिति इलीगल माइग्रेंट भाबरे जेमि तमे जानिछ म्यांमार रो हमर नॉर्थ ईस्ट रे आसीबा पई illegal migrants आसीबे आउ दैट टू दे आर सिमिलर टू कुकी एंड दिस इज व्हाट मेथीज आर क्लेमिंग कि एनसीआर कराओ नेशनल सिटीजनशिप ऑफ रजिस्टर कराओ कहीं मोस्ट ऑफ जो दंगाई माने जो माने आतंक करूचंती से माने आम लोक नुहंती से माने बाहर लोक एंड कुकीज ऑन द अदर हैंड आर सेइंग कि दे वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अस हु इज ट्रू हु इज करेक्ट हु इज रॉन्ग दैट ओनली टाइम कैन से बट फॉर द टाइम बिंग आमे एतिकी जानि परिबा एबे पई तो एतिकी जानि परिबा कि एई सबु जिंसर कोन लिमिटेड स्कोप अछि. Against this worrying backdrop, the 15th BRICS summit took place in South Africa on August 23-24 with the theme BRICS and Africa. It would be followed up early in September in the 18th G20 summit hosted by India, where several issues of the global south with Africa as a focus would come up. ताले BRICS रो चलीची आउ G20 रो भी अछि तो ई सब इश्यूज निश्चित आसीबो डिस्कशन पाई. The annual sessions of the United Nations General Assembly would also get underway. Once again, the black continent का को कहै छै अफ्रीका को काइना तांका लोकोडा देखिबा पई डार्क बोली ब्लैक कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल्स माने कोन तमरो गोटे मु कहितली प्रेगनेंसी टाइम रो आछि तमरो से दर्दनाक सिचुएशन जेतबेले लेबर पेन रो आछि ट्रैवल्स ता माने तमरो पास्ट रो मेमोरी जोटा जेमति कोआ जाय गोटे मां केबेले केबेले भी तार प्रेगनेंसी टाइम रो दर जो पेनटा बा लेबर पेनटा केबे भूलेनी तो सेमिति वुड ट्रैवल्स वुड प्रिक द वर्ल्ड्स कॉन्सेंस वर्ल्ड रो विवेक को से प्रिक करि परिबो कि से सैया कहबा को चाहूचंती बारंबार करि परिबो कि India's robust ties with Africa are deep, diverse and harmonious that range from Mahatma Gandhi's satyagraha against the apartheid माने तांको जो बाछंद कर देइतले to the UN peacekeeping role ताले महात्मा गांधी का सत्याग्रह हो नेल्सन मंडेला का apartheid against रे हो बा UN रो peacekeeping rule सब हो सेही सब पई हमर deep ties. Although we now import less oil from Africa and sell fewer agricultural products, India-Africa trade reached 98 billion in 22-23. एबे हमरो कमी गला परे भी 98 billion अछि. India's investment and other socio-economic engagement with Africa remain robust. Robust माने कोन? In case of a failure, robust is not strong. Robust को strong संगरे confuse करिबो नाही. Strong तो जानिचो कोन? Robust माने in case of a failure से bounce back करिबो बा roll back करिबो जेमति तम कंप्यूटर रिस्टार्ट करूची. Especially in sectors as education, healthcare, telecom, IT, appropriate technology and agriculture. India was the 5th largest investor in Africa and has extended over 12.37 billion in concessional loans. ताले 5th largest investor थिला India भी एतिकी लोन देई सारलानी. India has completed 197 projects and provided 42,000 scholarships since 2015. India loan giving mode रे अछि ताकू सपोर्ट करबा काइना इंडिया ताटू फायदा उठाउची ता माने अफ्रीका रो जदी व्यू पॉइंट रु कहबो अफ्रीकन व्यू पॉइंट रु इंडिया कोन
African viewpoint ru India African viewpoint ru India कोन गोटे प्राइवेट प्लेयर भलिया ठीक अछि सेति पई से कहउचंदी India रो corporate social responsibility भलिया रहबा कथा approximately 3 million people of Indian origin live in Africa many for centuries they are Africa's largest non native ethnicity से माने अफ्रीका रो non native ethnicity माने तांको लोक नय कि इंडियन सबुटो अधिका इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू लिवरेज करिवो माने फैसिलिटेट करिवो लिवर माने होची गियर तो सेमती गियर पकेबो माने फैसिलिटेट लिवरेज करिवो इट्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल विथ अफ्रीका टू हेल्प द कॉन्टिनेंट ईदर बायलैटरली और थ्रू दिस मल्टीलैटरल फोरम्स ताले इंडिया बेस्ट प्लेस ईदर ताकू कोन करिवो बायलैटरली करिवो डायरेक्ट इंडिया कला अफ्रीका संगरे bilaterally or through these multilateral forums के हला multilateral forums तमरो G20 हला BRICS हला and so on its hosting of the G20 summit will present it with a historic देखो मु तुम कहितली ना historic पाकरे कोन लागुची historic पाकरे ए लागुची आजि काली तुम कहितली आर्टिकल्स पढैला बेले आगुरु आन लागुतिला बट एबे ए लागुची with a historic opportunity to up the ante माने जो मूड अछि ताको बढ़ेबो आंटी करिबो माने से आंटी अंकल वाला आंटी नुह बुझि पारलो बा तमरो बहुत दिन प्रिपरेशन कला परे जोटा तमे हबो सेटा नुह एज लिमिट बढ़ी गला तमे जोटा हबो से आंटी होची AUNTY आंट रु आंटी आछि एई आंटी माने कोन एई आंटी माने प्रीडेटेड बाय आंटी माने कोन गोटे स्टेक को बढ़ेबो पोकर गेम रे भी आंटी पोकर गेम रे कार्ड्स गेम रे आंटी आसे आंटी माने कोन आंटी माने तम बेट टाको बढ़ाई दबो सो दैट सामना वाला प्लेयर आइदर शो नै जिवो नले कोन करिवो कार्ड्स फिंगी दबो तमे एतिकी कॉन्फिडेंस शो करिवो it could consult like-minded G20 partners and multilateral institutions for a comprehensive semi-permanent platform to resolve the stalemated security and socio-economic situation in several parts of Africa से कहउचंती apart from that से कोन करि परिबे apart from that से माने कोन करि परिबे comprehensive semi-permanent platform का को कोआ होची सेमी परमानेंट प्लेटफॉर्म जमती ब्रिक्स हे गला G20 हे गला परमानेंट नुहंती यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जमती परमानेंट मेंबर्स तार अछन एटा परमानेंट सेमी परमानेंट काई कि तमे जानिचो एबे ब्रिक्स रे भी 40 न्यू मेंबर्स ऐड होबार ये करचंदी आ न्यू मेंबर्स को इंडक्ट करबा पई बोथ इंडिया चाइना रशिया साउथ अफ्रीका समस्त कहचंदी टू रिजॉल्व द स्टेलमेट माने नो प्रोग्रेस सिक्योरिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका इट शुड डिलीवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी and economic development by combining peacekeeping with socio-political institution building ताले political stability भी करि परिबो आ peacekeeping आ socio-political भी करि परिबो माने ताको directly administration रे economic रे सबुतरे इंडिया हेल्प करि परिबो we can offer force multipliers such as a targeted investment and transfer of relevant and appropriate Indian innovation such as the JAM Trinity Jan Dhan Aadhaar Mobile DBT direct benefit transfer UPI unified payment interface and aspirational district programs से कहउची इंडिया आउ कोन करि परिबो आमे पूरा टेक्नोलॉजी तो केबे दबानी आमे कोन करिबा ट्रांसफर ऑफ रेलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट इंडियन इनोवेशन जोटी ता माने आमेर जो डिफेंस इनोवेशन तोड़ी दे दबा किंतु जोटी दरकार जेमति हमर जैम ट्रिनिटी हला कोन जनधन आधार आउ मोबाइल तीनटा को मिसेल हे गला जाम ठीक अच्छी जान नुरे जान वालानी जैम बुझ पारलो हाँ जेली नुह जैम बटर भी नुह डीबीटी होची डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोक पाखरे पहुंचबो यूपीआई बाय यूनिफाइड पेमेंट तमरा गूगल पे फोन पे एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बाय ऑफरिंग अ मोर पार्टिसिपेटिव एंड लेस exploitative alternative New Delhi can make the India Africa ecosystem an exemplary win-win paradigm for the 21st century से कौन करिवो ताको कौन करि परिबो win-win paradigm बढ़िया नहीं परिबो paradigm माने मॉडल से कहउची मोर पार्टिसिपेटिव एंड लेस एक्सप्लॉइटेटिव आमे तांको ये रे बेसी पार्टिसिपेट करिबा आउ लेस एक्सप्लॉइट करिबा तांकर कंडीशन को न्यू दिल्ली माने इंडिया मेक करि परिबो इंडिया अफ्रीका इकोसिस्टम को एक्जेम्पलरी win-win paradigm माने मॉडल गोटे win-win मॉडल भलिया आकु करि परिबा this is what the author is trying to say excellent articles written excellently ठीक अछि
we will try and attempt a précis of this because time achi. India's G20 opportunity for an African Renaissance. The author here tries to bring to focus, by highlight, by accentuate, that African nations are at an all-time low. Traditional problems such as corruption, existential challenges, misgovernance, unplanned development and domination of ruling tribes were always present. But recently new disruptors such as Islamic terror, intertribal scrimmage, changing climate, runaway food inflation, urbanization and with youth unemployment have further complicated the situation, coupled with traditional socio-political fabric of the country. In such a scenario, private groups from developed countries such as US, France, UK, Russia, etc. were employed for a limited role in maintaining law and order. But with these developed countries facing serious economic and political instability, especially after the COVID situation and Russo-Ukrainian war, the field is even more anarchist in Africa. In such a scenario, the dictators who were otherwise obliterated have again returned to power, and they further their political goals and ambitions, knowing fully well that they cannot control the situation, which gives no restriction to their boundless political hopes and ambitions. Case in point, as an example, dictators and generals coming back in Egypt, Burkina Faso, Mali and Niger, and even Libya and Sudan are going in the same direction, being undemocratic. China, which was once the biggest investor, is also not able to cope much or to help much, as it is under severe economic strain itself. This next paragraph, right? This makes India a good player. This opens a whole new dimension of challenges and possibilities for India. India should look beyond being only exploitative in nature and contributes to its governance and administration, because only a stable country can be a stable source of income and continue to be a consumeristic market for an emerging economy such as India. India can also share its relevant and appropriate technologies with Africa, such as the JAM Trinity, UPI, DBT, and other aspirational district programs. Further, India can contribute on a bilateral level and also through multilateral platforms such as SCO, BRICS, G20, etc. A case in point here can be that the whole world suffered from COVID crisis till Africa was cured of the same. In other words, any part in the world having anarchy is a threat to law in any other part of the world. The world can live peacefully only when the whole world knows to coexist and the lessons of tolerance. India
is well poised to further African aspirations in the same direction by being more participative and less exploitative, and at the same time using multilateral platforms to further the African cause, over which people have lost sight and focus in recent times by being troubled with their own domestic turmoil. So this could be a lovely précis of the same. पिला माने मने रखिबो सबुति पाई कोड यूज करिबो y 292 धीरे धीरे बुझिबो मासे देखिले 10% तापरे 3 मास देखिले 50% आउ 6 मास जदि कंटिन्यूअसली देखिबो 90% बुझिबो. ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. साइनिंग ऑफ. बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे ऑफ लर्निंग. बाय बाय.